नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। All praise be to Allah subhanahu wa ta'ala. All salutations and greetings of peace upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his noble family members and his companions. And after that, my dear brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, my topic is the names of paradise and its grades in Quran. The different names of Jannah and the grades. क्योंकि जन्नत एक नहीं है, उसके कई हिस्से हैं. What are the names of Jannah in Quran and the different grades of Jannah, ranks of Jannah? And in Quran, the first word about Jannah, also Allah subhanahu wa ta'ala said, Al-Jannah. Am hasibtum an tadkhulul Jannah. Do you assume that you will enter paradise, Jannah, without any good? وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ. Whereas Allah has not yet tested those of you who fight for his cause. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Nor has he judged the steadfast. क्या तुम समझते हो ऐसे ही जन्नत में चले जाओगे? अभी तो अल्लाह ने तुम्हें आजमाया ही नहीं है. अभी तो अल्लाह ने तुम्हारे सब्र का इम्तिहान ही नहीं लिया. अभी तो अल्लाह ने ये आजमाया ही नहीं है कि तुम में से कितने जहाद करने वाले हैं अपने नफ्स के खिलाफ, शैतान के खिलाफ और दुश्मनाने इस्लाम के खिलाफ. जन्नत आसानी से मिलने वाली नहीं है. पहली बात ये ज़हन में रखें कि उसके लिए बहुत बड़ी आजमाइशें आती हैं. एक छोटा सा कोरोना की आजमाइश आ गई तो हम सब मस्जिद को वीरान करके घरों में बैठ गए. अल्लाह के घरों को वीरान कर दिया. ये आजमाइशें हैं. अल्लाह टेस्ट यू. Then after that he will give you the paradise, Jannah. And the other name of Jannah, Allah subhanahu wa ta'ala said, Darus Salam. The other name of Jannah, Darus Salam. Darus Salam means the home of peace and security. The home of peace is the Darus Salam. Lahum Darus Salam inda Rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Surah Al-An'am. For them is the home of peace and security with their Lord, and He is the one who is their protector because of the pious deeds which they used to do. And the other name is Darul Muttaqeen. The other name of Jannah is Darul Muttaqeen, and Darul Muttaqeen means the abode of those who are God-fearing, pious persons. Muttaqeen, Parhezgar. Wala ni'ma darul muttaqeen. And how excellent is the abode of those who are muttaqeen, God-fearing. Darul Muttaqeen. The other name is Darul Qarar. The other name of Jannah, Darul Qarar. And Darul Qarar means the home of permanence.
वो हमेशा के लिए घर है। जो जन्नत में चला गया फिर वहां से निकलना नहीं है, हमेशा के लिए। दारुल करार। अल्लाह सुब्हानहू व तआला said, या कौमी इन्नमा हाज़िल हयातुद दुनिया मता' व इन्नल आखिरता हिया दारुल करार। Surah Ghafir. O my people, the life of this world is nothing but a few days gain, and the hereafter is certainly a home to live in forever. ये तो few days है जिंदगी, इसी में दिल लगा के ना बैठ जाओ, उसकी तैयारी करो। दारुल करार, हमेशा की जिंदगी है, हमेशा रहने के लिए वहां जाना है, यहां हमेशा के लिए नहीं आए। We are on journey, we are traveler, we are musafir here. This is not permanent residency. Permanent residency, here Darul Qarar. And the other name of Darul Akhirah, the name of Darul Akhirah, the meaning, the home of hereafter. And Allah subhanahu wa ta'ala said, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهَوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. And the luxury of the worldly life is nothing but play and funfair. And certainly it is the home of hereafter which is the better for the God-fearing muttaqeen. Do you not understand this reality? Use this. This word is not forever. This is temporary. And the hereafter is the permanent. And the other name, Allah subhanahu wa ta'ala said, Darul Muqama. The meaning, Darul Muqama, the timeless abode. हमेशा की जिंदगी वहां, टाइमलेस अबॉर्ड। अल्लज़ी अहल्लना दारल मुकामा मिन फदलिही ला यमस्सुना फीहा नसबुन वला यमस्सुना फीहा लुगूब। बड़ी खास बात इसमें अल्लाह ताला ने फरमाई है। ये सूरह फातिर वर्स नंबर 35। Who has out of his bounty admitted us to the timeless abode wherein will touch us neither labor nor fatigue. वहां कोई थकावट नहीं होगी, कोई गोलियां खाने की जरूरत नहीं होगी। भाई बुजुर्ग, हम तो गोलियों पे चल रहे हैं, दवाइयों पे चल रहे हैं, कहते हैं ना, दवाइयां खा के चल रहे हैं। वहां कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं होगी, कोई थकावट नहीं है। No labor, no fatigue in the paradise. And the other name, Al-Hayawan. Surah Al-Ankabut. Ankabut, and the verse number 64. Allah subhanahu wa ta'ala said, وَمَا هَذِي الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. And, O people, the life of this world is nothing but sport and pastime. And the home of hereafter is the only true life. Would that they knew this secret? ये आपके ये सीक्रेट है, कुरान को पढ़ो और इस सीक्रेट को जानो कि वो असल जिंदगी वहां है। And the other name of Al-Husna, the other name of Jannah, बोलिए, सवाब मिलता है। एक लफ्ज पढ़ने पे 10 नेकियां मिलती हैं। Al-Husna, Subhanallah. Al-Husna mean the promised good. Allah की तरफ से, from Allah subhanahu wa ta'ala, the promised good. Al-Husna. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala said, Allah has indeed promised good to all the believers, yet He has bestowed the merit of excellence with the mighty reward and bounty on those who strive hard over those who stay behind.
And the other name, and this verse is Surah An-Nisa, verse number 95. The other name in Surah Dukhan, verse number 51. Allah subhanahu wa ta'ala said, Innal muttaqina fi maqamin amin. The name of Jannah is Maqamu Amin. Is the meaning, the place of calm and peace. The place of calm and peace, Maqamu Amin. Allah subhanahu wa ta'ala said, indeed, the God-fearing muttaqeen will be in the place of calm and peace. Innal muttaqina fi maqamin amin. The other name in Surah Al-Qamar, Allah subhanahu wa ta'ala said, Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. The other name of Jannah is Maq'adu Sidq. Maq'adu Sidq means special seating. Special seating in the paradise. The meaning, Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Indeed, the God-fearing will rejoice in gardens and streams and will be seated in special nearness to the sovereign Lord, their Rabb, of true power during holy sessions. The other name, the beautiful name in Surah Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala said, Jannatul Firdaus. This is the other name of Jannah. Jannatul Firdaus, the famous name. Jannatul Firdaus means the garden of paradise. Allah subhanahu wa ta'ala said, Innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Indeed, those who believe and do good deeds persistently shall have the gardens of paradise as their hospitality. Subhanallah. Subhanallah. And Surah Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala said, Ulaika humul warithun, alladhina yarithuna al-firdaus, hum fiha khalidun. Verse number 11, Surah Al-Mu'minun. It is they who will be the inheritors of paradise. They will also inherit the most superior gardens of paradise, where all the bounties, comforts, and pleasures of nearest to Allah subhanahu wa ta'ala will abound. They will live there forever. Hum fiha khalidun. Jannatul Firdaus. And the other name, Quran said, Surah Al-Sajdah. I saw Zabardast. Jannatul Ma'wa. Subhanallah. Jannatul Ma'wa. The beautiful name. Jannatul Ma'wa means the gardens of the eternal repose. Jannatul Ma'wa. And Surah Al-Najm, Allah subhanahu wa ta'ala said, Indaha Jannatul Ma'wa. Allah ke yahan Jannatul Ma'wa bhi hai aapke liye. Subhanallah, Subhanallah. And the other name, Jannatul Na'im. And Jannatul Na'im means the gardens of bliss. Neematon wali Jannah. Har kisam ki neemat. Every neema, every blessings of Allah subhanahu wa ta'ala is there. And the other name is Jannatul Aliyah. And the meaning of Jannatul Aliyah means a magnificent paradise. And then the next name of Jannah is Jannatul Adn. And Jannatul Adn, Eden. Jannatul Adn means the evergreen garden. यहाँ तो पत्ते गिर जाते हैं ना, जन्नत में पत्ते नहीं गिरेंगे. उन दरख्तों के पत्ते गिरने वाले एवरग्रीन. सुभान अल्लाह. कितने ब्यूटीफुल होंगे, कितने खूबसूरत होंगे हैं. वला निअमा दारुल मुत्तकीन. Allah subhanahu wa ta'ala, how is excellent is the place of paradise. How is excellent. Jannatu Adn, the evergreen garden. And then Allah subhanahu wa ta'ala said the other name, Jannatu Abadiyya. And Jannatu Abadiyya means the eternal gardens. कई बाहर होंगे, कई अंदर होंगे, खूबसूरत गार्डन्स होंगे. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जन्नत के नाम इसलिए आज कुरान से मेंशन किए कि हमें शौक पड़ जाए जन्नत में जाने का.
और यहाँ की ज़िंदगी से दिल ना लगाएं, उस ज़िंदगी की तैयारी करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उसकी तैयारी करने की तौफीक इनायत फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग पर फसुन्ना।